Good evening, Dr. Saab, and good evening, everyone. Should we wait for another 2 or 3 minutes, sir, or should Yes, we sir. start? We can wait for another 2 or 3 minutes. But the thing is that I again request all of the participants to kindly join prior to 5 p.m. so that we may begin the session by 5. So we are getting the request from other participants also who are joining, but they have to wait for others. So you are requested kindly to join prior to 5 minutes prior to your timing, please. Okay, let us start now. So, I hope that you have tried what we have assigned the work for you yesterday. Is there any query regarding yesterday's module? That is regarding the patrons or what we have done so far, cataloging patrons and circulation section. Is there any query? Am I The audible? Yes, Dr. Saab, you are audible. I request all the participants if they have any query regarding yesterday's module, that is the pattern module, they may put it to Dr. Mahipal, and your microphone is working right now. Hello.
हेलो। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। सर कल आपने जो वो बताया था ना, अपलोड पैटर्न इमेजेस, हाँ जी। सर वो हुआ नहीं है। मैंने कल किया था ट्राई, सिंगल तो हो रहा है जो लेकिन वो डबल नहीं। हाँ जी, बल्क में जो आपने हाँ पैटर्न वो अपलोड किया था, हुआ नहीं है, एरर आ आपकी रही है उसमें। आवाज, हाँ मुझे लगता है आपके नेटवर्क का इश्यू है। सर उसमें एरर आ रही है, प्रॉब्लम शो होती है। अच्छा, क्या एरर आ रही है? एक मिनट सर। एक्चुअली द एरर्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ठीक है, see सर the error carefully. It will tell you automatically what you are going to do or what you have to do to rectify the error. सर इसमें एरर आती है कि प्लीज रिव्यू द एरर लॉग फॉर मोर डिटेल्स एंड अननोन एरर हैज अक्योर्ड। नहीं, आप can you share the screen? If you are possible, is it possible to share the screen? स्क्रीनशॉट लिया हुआ है सर मैंने। एक्चुअली सर मैं कोहा ही ट्राई करती हूँ लाइब्रेरी में, तो सिंगल सिंगल तो तो आज मैंने जैसे कल आपने अपलोड ऊपर तो आपकी आवाज कट रही है तो मुझे क्लियर नहीं हो रहा है आपका क्वेश्चन भी, और प्रॉब्लम क्या आ रही है। आप ऐसा करिए, आप चैट में लिख दीजिए क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैडम आप चैट में इसे मेंशन कर दीजिए, हम उसके बाद इसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। एनी अदर क्वेरी? Okay, let us start further. Let me share the screen. Is it visible? Yes, it is visible, sir. Okay, that's it. Okay, for the demo version, what we have to do, we have to go to demo Koha, to write Koha demo at Google. Here you can see the first link from wiki.koha community. Here we can select any of the demo version of from any of the vendor. Here we will note down the credentials provided by the vendors, and here enter those credentials. Here we can see. So first of all, what we have to do, we have to create the library. There's a benefit, I believe there is a great benefit of using demo version. You have more chances to practice again and again for creating the library, item type, authorized values, pattern categories. Means you have more chances for the administration section. We will create a new library. Here you can see the library code and name of the library. Again, we will create the item types which we need. Your new item type. As I had created yesterday, textbook. From the pattern category, we will create
one or two categories. Was and create one category of teaching staff. Here we have one more category, that is statistical. I'll let you know what statistical means. Just 1 minute. देखो लाइब्रेरी में बहुत सारी इन हाउस यूजेस भी होती है. It means the books which are being consulted within the library that are not being issued. So to have the account of those books, to have the record of those books which are being consulted within the library, we can make a statistical account. That was the part of circulation section only. But how we can create that statistical account? That is, first we have to create a pattern category. The pattern category should be of, I'll create one new pattern category, that is in-house. In-house library use. You can use library use. You can give so many months as, and choose the category type as statistical and save it. Now define the circulation and fine rules. Here you can define, first set your library so that you can see what you have defined. I'll check my library. Here we can see the teaching staff and the in-house library use. For that, we can define the same rules, and here we can allow more books. Suppose we have an average of consulting 100 books in our library in a day. So we will allow 100 checkouts. Here we will just save it. And we will create one pattern in this pattern category. Like the other patterns, we will create one pattern in the same in-house library use. Here, in-house. To save it, you can name it as the card number. Save it. Now, if any book is being consulted within the library, issue the book here to this particular account. Whenever you will issue this book, the book will not be issued actually, but it will be recorded as issued books as used in-house within the library. So you can take the report of the statistical books, statistical record of these books, which we have, the persons, the users have consulted within the library. So whenever you will check out this book, it will not be shown as the issued book, rather it will be shown as the book consulted within the library. So likewise, we can take the count of these books. We can take the prepare the record for those books which are being consulted within the library itself. Okay. So next is we were in the administration section. Here we have created the library. We have created the item type.
pattern categories and we have created the pattern category, yes, and we have defined the circulation and fine rules. This was all from administration section. Okay, now we need some patterns and some books to be issued. We need a pattern within this pattern category which we have created in the teaching staff. So here I'll create one pattern, the teaching staff, and I'll create some documents and fetch some documents from the Z39. Here we can also enter search for another Z39 servers. Like you can see, here is one from Library of Congress itself. Na? Likewise, I'll show you how you can add more and more data servers. Okay, just 1 minute. You can save. Ten books. Okay, so now we have the pattern and the books also. Now we can, how we can add new Z39 servers from here when we have searched for those. You can see it was showing only one Library of Congress. So you can add more search targets here. How you can do? You can go to administration. Here you can see Z39.50 server. Here you can add new Z39.50 servers. The details of these servers can be found. You can search for at Google. You can search for Z39.50 servers, Koha Z39.50 directory. Z39.50 directory. Here you can see first and second link are from this IR Spy. You can see the directory of these Z39.5 targets. And you can see there are so many servers. Here you can find the details of these servers. Suppose I want this to find any book or any record from this particular account or this particular catalog or the database. So I can add, here is the host, port and database name. What we need the this only. These are the, suppose I want to add this. So these are the required fields. Host name is required, port is required, and database name is required. So we can find here. So we can add from here. Whatever, how. Okay. Let us see. Our today's topic of discussion is data migration. If you want to migrate data in bulk, how we can do that? Suppose we have data in Excel format, how we can upload that data into the database, that is called the data migration. For that, what we need? We need some data. So we have some sample data.
Here we have some sample data. We have these books. There are 8 books record. 5 books are one record is of 5 books and 3 single books. So we have 8 books in all, having 4 records. So we will enter this. How we can do this? We have taken an overview yesterday also, or day before yesterday. We will first assign the mark fields, mark tags to this. Like we should know in which field which information is to be entered. Like for example, author information must be filled. First author information must be filled in $100 A, and second author must be filled in $700 A. Likewise, title information must be filled in $245 A, edition in $250 A, name of publisher in $260 B, place of publication in $260 A, and year of publication in $260 C. Number of pages in $300 A. We have discussed it earlier. I'll again demonstrate you. First, what we need, we may have ISBN number, where it will be put $020 A. Oh, sorry, sir, C. Okay. What author, title, author से 2 भी हो सकता है, author 2, title, edition may be there, or place of publication, name of publisher, year of publication, pages, volume, there may be content, there may be subject heading, there may be some kind of discount percentage, there may be price after discount, or Koha item type. That is mandatory. Okay, the tags for this information, as it will fetch the information from these tags only. These must be assigned beforehand, and these must be assigned carefully so that the information should be put in within the particular perfect column. It should not go into the wrong column, otherwise it will create a hazard for you all. So we will put it carefully. For the author 1, we have to assign the field $100 A. For author 2, it will be $700 A. Title $245 A. Edition $250 A. Place $260 A. Name of publisher $260 B. Oh, sorry, B. For year, it's $260 C. Number of pages $300 A. Volume $490 V. Content, it's $500 A. Subject $650 A. Discount percentage, it's $947 C.
Price after discount, I think we have to check whether it is $947. It's the, I think I'll check it again. Okay, $942 C. This is Koha item type. It's the required field. So we will enter the sample data in this format. Our all the data, we will prepare this data as per this format. We will assign these tags to the these columns. You can see I have assigned these tags to this particular column. So the information given in the below columns will be entered automatically in this particular field. So what we will do, okay, suppose it's now complete. Okay, it's complete now. We suppose next step is that we have to create MRC file from that. As we know, Koha will not accept the data from Excel itself. So we have to create the MRC file. You can see whenever we save the records for import, it just asks for MRC file. So we will have to create the MRC file. For that, we have to install Mark Edit software. There is one software that is Mark Edit. You can search for that in Google. MARCEDIT. Mark Edit. You can install Mark Edit from here. It's open source software, free software. So you can see here Mark Edit download. Then you will see this will be the first link from where you can download the software. Here. From here you can download the particular version you want. Suppose this is a common version. From here you can see the window build options. Just click on this. It will download the exe file from where we can install. It's very easy. It's graphic user interface, so there is no problem to install. Okay, suppose we have installed, I have installed it earlier. So I'm going to skip the installation again. After installation, just open the software. The software will be like this. Here, we will use the export tab delimited text. Use export tab delimited text. Again, a pop-up window will open. Here, you will choose the source file. Source file means where your sample data or the data which you have prepared is available. So I'll give the path of that file, that particular file, where I have put my sample data in Excel format. Yeah. Yeah, this is the sample file. Okay, sorry. This is not the actual file. Yeah. Okay. This is the output file, means where you want this file, that MRK file, to be put after processing. So I'll put it in on the desktop, or I'll put in this particular field, or you can put anywhere where you want. I'll put it on desktop. I'll give this the name of demo. Please note here that it will not be created as an MRC file. It will be created as MRK file first. So save as type will be mark text file, that is .mrk. I'll save it. Here you can see
Excel sheet name. We will have to choose the particular sheet where the information is available. It's available on the sheet 1. Okay. Next, delimiter value, put it as default, that is tab. After that, in the options field, you will see edit LDR 008. Click on it and choose book as the leader. Choose the book as the LDR. Click OK. Don't check Unimark as we are using Mark only, Mark 21. So OK. And UTF-8 is checked automatically. So make this default. Next, click on the import button. Import file. Now you can see the snapshot of the data. The data which we have entered is showing here in the field 0. This is entered as all the fields are in ascending order. These fields are assigned automatically by the Mark Edit software. So in the field 0, we can see we have entered ISBN, that 020. Okay. Here we have to map this. We have to map this as the field 0 to 020 $A. We have to map, add argument. We have to enter like this if we want to add as manually. But here in the latest version of MarkEdit, we have one more good feature, that is we can generate these automatically. It will generate all the it will map all the fields automatically. So we will click on the auto generate field. Auto generate. Here we can see there are 2 fields, so I'll delete one item. Okay, these are created automatically, all the fields. So here we have to do one more thing. We have to join the liked fields, the fields which are in one subfield, like 082, 082B. So we have to join those items. Join items. Likewise, for the 245A and B, C, we have to join. I join 260A, B, and C. Join. The subfields from the same field, we will join those fields. Okay. Join item. And we will click on finish. Now you can see the process has been finished. Record saved. Okay. So you can see a new file has been created as demo.mrk. Okay, again, what we will do, we will click on the Mark editor. We'll click on the Mark editor here. Here, open the file. Click on the open. Choose the path. Click on open. You'll see the information that we have filled is assigned to those fields which we have created, which we have mapped earlier. You can see, you can check the fields whether it is in okay or not. Here, I think the info, just wait for 1 minute. I'll check.
Okay. Here you can see I have wrongly put the item type. Here you can see 952A and 952B. These are the permanent library and current library. We have to put the code here. I have put the code, but not for all. Likewise, our item type was textbooks. The code was TB. So I have put wrong. That's why I could see some unusual things there. I'll save it again. Yes. In you'll choose the file demo, use the path desktop demo one, sheet one, click on book, okay, import file, click on auto generate, join the liked items, just join the fields. Okay, join and finish. Okay. Now click on mark editor, open the file which we have created, demo one. Here you can see now in the 952 tab, we can see permanent library and current library. We can see the location. It has joined it perfectly now. We can see the session number, item types, etc. Earlier these were not seen and these were missing. Not missing actually, but these were not joined perfectly. So here, what we have to do, we have to compile the records. Just click on this compile and it will create a MRC file for you. It will create a MRC file. Here you'll see demo.mrc. Oh, sorry. Demo.org will save. Okay, it has created. Okay, we'll close this. We'll close the. It's all over about the data migration. Now we will go to cataloging. In cataloging, stage records for import. The file and those particular file which we have created as the MRC file. Please ensure that it must be an MRC file, not the MRK one. Okay, upload it and just stays for import. The job has been unqueued, and when it turns into green, it means that job has been processed. So we will click on the manage stage records. We will click on this. We can check the file bibliographic records. 9 records are there. It has been staged. So it is showing the status staged. It is not imported. So we will click on this file name and just click on this import this batch into catalog.
the job has been enqueued. So it will show us the details. Yes, it has been, is in progress. You can see you can check the details of the job from administration section also, or we will go to this cataloging again, manage stage record. It is showing me stage. When it will be completed, it will show imported. Okay, there is something wrong. Otherwise, it would not have taken so much time. We will check what is the problem. Upload another file. For that, we have to add one item type. If your items type and or your library code is not matched with the ones that you have created the file, it will not upload. It will not import the file into catalog. So in this file, we have to create one new item type, that is book or BK. Check whether we have the BK. BK is available, and we'll create one book. Okay, you can see it has completed import of records. This, you can see number of items added 7, number of items ignored 1. It may be ignored due to the duplicacy of accession number. It takes only unique accession numbers. So if that particular accession number is available in the database earlier, it will not take consider that particular record. It will ignore the item. So likewise, we can migrate the data, but you have to take into consideration some points, like we have to enter particular information in a particular field first, and we have to assign that particular subfield, that particular mark tag to that particular field. So you can search for those books which were library classification by Ranganathan. It was library classification Ranganathan.
There may be some spelling mistake. That's why it was not showing. These are the four books, five works by Ranganathan. You can see M5. I'll show you the inform details from the demo. You can see these were the Akshasa numbers M1 to M5. You can see the M5 library classification and introduction by Ranganathan SR, and these are the particular information. So you can search these particular. Suppose you want, you can extract the report for the particular items or the records which you have cataloged today. Likewise, suppose we have entered or we have imported the records wrongly, or those were the wrong records which were having the wrong information. So in that case, we'll go to cataloging, go to manage staged record, and on the particular file which we have imported, suppose this we think that it is a wrong information, having wrong information. These records are wrong. We don't want these records to be imported in our database. So what we will do, we will revert these. Here, I'll click on that particular file and click on undo import into catalog. So if I click on that, it will the records will be reverted. It will be removed from the database. It will be processed in the reservoir. And again, if suppose I'll show you undo import this back catalog. Okay, the job has been enqueued. It will take some time. Okay, success, import reverted. Now again go to catalog, manage stage record. Here you can see the status is reverted, and here you can see clean. Just click on this. Okay, now it's cleaned from the reservoir. The records has been cleaned from the reservoir, and now you can delete this particular file. Okay, so in this way you can remove those records from the database whom you think these were the wrong. But again, I request you to do all these things very carefully, as these will directly affect the records in your database. So this was the data migration, how we can migrate the data from Excel, how we can convert the MRC file, and how we can upload that file into the catalog, how we can import the records into the catalog. So, Ajay sir, hello, Yes, sir. Sir Ajay, Yes, sir. are you listening? Okay, sir, Yeah. okay, just ask them for the query. If participants have Okay. query, Okay. just unmute them. Okay. Just a second. Yeah, we request the participants if in data migration, if you have any query with the Dr. Mahipal, you can put it up directly, and now your microphones are working. Is there any query for data migration, please? Hello.
हेलो। Yeah. गुड इवनिंग महिपाल सर, गुड इवनिंग अजय सर। हाँ Good जी। evening, Dr. Chitra. महिपाल सर, मुझे एक बार वो जो आपने सबसे फर्स्ट स्टैटिकल इन हाउस वाला बताया था ना सर, वो एक बार रिवाइज करवा दीजिए मेरे को। ओके कुछ मिस लगा, मतलब मुझे नहीं समझ आया वो। ओके, उसमें क्या था कि आपके पास जो भी बुक्स हमारी लाइब्रेरी में, बहुत सारी बुक्स कंसल्ट होती हैं विद इन लाइब्रेरी, हाँ जी। उनका जो रिकॉर्ड हेलो। Dr. Mahipal. हाँ सर की आवाज नहीं आ रही मुझे। Dr. Mahipal. Dr. Mahipal. Dr. Mahipal. I'm just trying to contact him. Please wait for a moment. हेलो हेलो। Hello. Yes, Dr. Mahipal, your voice was not audible earlier. ओके, am I audible now? Yeah, Right. now you are. Okay. So the question was about the statistical pattern ना, right? इसके लिए आपको क्या करना है? We have to create one statistical pattern. For that we have to create one pattern category first. Any kind of pattern, if you want to add those patterns into your database, what we need one to create one pattern category and assign that particular pattern to that particular pattern category. So for that we have to create one pattern category first. From the administration section, we'll create one pattern category that must be statistical. There, while creating this particular pattern category, you must choose, just 1 minute, but we have created this particular, you must choose the category type as statistical. Here, while creating this pattern category, you must choose statistical as category type. So here we have created one statistical pattern category. In this particular pattern category, we have created one pattern that is in-house, or you can name anything. You can name it a librarian or anything, whatever you want. I have named it as in-house. सर कैटेगरी टाइप में सिर्फ स्टैटिकल मेंशन करना है उसमें? हाँ, वहां पे सिर्फ कैटेगरी टाइप मेंशन करना, आपने और कुछ ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है कुछ भी टाइप। नहीं, जैसे डिस्क्रिप्शन में हम अगर लाइब्रेरियन लिख देते हैं तो कैटेगरी टाइप में क्या हमें स्टैटिकल ही मेंशन करना है? हाँ जी, हाँ, कैटेगरी टाइप आपको स्टैटिस्टिकल ही रखना है, क्योंकि यहाँ स्टैटिस्टिकल का मतलब है कि ये बुक्स आपकी Koha is programmed in a way that the statistical records will not be entered as the checked out records. ठीक है, so those books will be recorded as the in-house used books, the books consulted within the library. ओके सर। ठीक है, तो जो बुक आपकी वहां पे कंसल्ट हो रही है विद इन लाइब्रेरी, तो आप यहाँ पे उस बच्चे को इशू नहीं करनी है, आपने डायरेक्ट सिर्फ ये अकाउंट ओपन करना है, यहाँ पे चेकड आउट पे उस बुक का रिकॉर्ड जो है यहाँ एंटर कर देना है, जो भी था हम M1, okay, it was M1, I think M5.
I thought, okay, whatever may be the barcode number, जी I was जी just telling you. ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह से एंट्री कर सकते हैं उसकी। ठीक है जी, क्लियर है? ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ जी। एनी अदर क्वेरी रिगार्डिंग डेटा माइग्रेशन? सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी सर ओके हाँ सर, जी, तो हाँ जी, हम कमलेश डेटा जी बताइए। माइग्रेट कैसे करें? सपोज सर हमारे पास सर मल्टी कॉपीज है, एक बुक की 5 कॉपी है सर, तो उसमें हाँ डेटा माइग्रेशन कैसे करें? और सर आपने कल एक टैग बताया था कैटलॉग करते टाइम 4040 सी, वहां पे हाँ आपने जी, बोला था सर डीडीसी हम वहां पे लिख लिया सर एक्चुअली। हाँ तो सर हाँ क्या हाँ हम वो डेटा माइग्रेशन करते टाइम एक्सेल सीट में भी हम उसको ऐड कर सकते हैं सर? हाँ जी, हाँ वहाँ भी असाइन कर सकते हैं आप डायरेक्टली। ओके हाँ वहाँ भी आप 040C का एक फोल्डर बना के, वो मतलब एक कॉलम में आप उसकी इंफॉर्मेशन में डीडीसी फिल कर सकते हैं। ओके सर। और ये मल्टी कॉपी सपोज है तो मेरे पास? हाँ, मल्टीपल कॉपीज के लिए आपको 2 फाइल्स तैयार करनी पड़ेंगी। सपोज आई हैव दिस 5 कॉपीज ऑफ दिस पर्टिकुलर आइटम, ठीक है, और सपोज आई हैव मोर आइटम्स, देन कुछ और बुक्स हम ऐड कर देते हैं जिनका हम 200 से दे देते हैं। ओके, ये हमारे पास कुछ और बुक्स हैं जिनकी हमारे पास पहले भी कॉपीज हैं और अभी भी मल्टीपल कॉपीज आई हैं। तो उस केस में आपने क्या करना है, पहले तो अगर तो वो बुक आपके पास पहले अवेलेबल नहीं है, तो फिर यहाँ पे आपको पहले 2 फाइल्स क्रिएट करनी पड़ेंगी। एक फाइल में आपको यहाँ पे यूनिक रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे। यूनिक रिकॉर्ड कैसे रखेंगे आप? यहाँ पे आप डेटा पे जाएंगे, पहले आप पूरी कंप्लीट फाइल तैयार करेंगे, फिर आप डेटा पे जाएंगे, यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। इज दिस जस्ट 1 मिनट, कंट्रोल्स, ठीक है। तो यहाँ हम शीट 2 यूज करेंगे, वहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग का इशू था, इसी वजह से वो नहीं कर रहा। द कमांड कुड नॉट बी कंप्लीटली यूजिंग द रेंज स्पेसिफाइड। Select a single cell within the range and try the command again. ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने ये सिलेक्ट किया डेटा, यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स पे गए, यहाँ आपके पास ये बाय डिफॉल्ट सारे सिलेक्टेड हैं, तो हमने कॉलम जो है अनसेलेक्ट करना है, और यहाँ पे जिस कॉलम में हमारा टाइटल है और ऑथर है, उन पर्टिकुलर 2 कॉलम्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। इट मीन्स हम उनको क्या कह रहे हैं, हम इसको कह रहे हैं कि भाई हमें वो पर्टिकुलर यूनिक टाइटल दे दो, उसमें से डुप्लीकेट निकाल दो जिसके ऑथर और टाइटल मैच कर रहे हैं। समझ गए हम कि इसमें से सिर्फ हमें जिसके ऑथर और टाइटल दोनों मैच कर रहे हैं, उनमें से सिर्फ एक रिकॉर्ड रख के दे दो, बाकी हटा दो सब। तो हम यहाँ पे ओके कर देंगे, तो यहाँ पे इसने एक ही रिकॉर्ड रखा, 4 जो डुप्लीकेट थे, इसको भी हम डिलीट कर सकते हैं इस फाइल को। तो यहाँ पे आपके पास एक रिकॉर्ड रह गया। इसी तरह मतलब जो सिंगल रिकॉर्ड्स हैं, जो मल्टीपल कॉपीज हैं, वो हट जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इस फाइल को सेव एज करके एक अलग फाइल बनाएंगे। ये एक थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसमें आपको इसको आप करेंगे सेव एज, और मैं इसको डेमो यू के नाम से कर देता हूं सेव। तो यहाँ पे आप पहले डेमो यू की उसके बाद
बनाएंगे, पहले जो जितने भी यूनिक रिकॉर्ड की फाइल होगी पहले आप उसकी MRC फाइल बनाएंगे, फिर वो MRC फाइल जो है पहले हम अपलोड करेंगे। फर्स्ट वी विल अपलोड द MRC फाइल विद यूनिक रिकॉर्ड्स, जिसके जितने भी यूनिक टाइटल होंगे जो वो फाइल होगी पहले हम वो अपलोड करेंगे, ताकि डेटाबेस के अंदर हर एक रिकॉर्ड की जो यूनिक रिकॉर्ड है उसकी एंट्री हो जाए, वो इंपोर्ट हो जाए। ठीक है, उसके बाद जो उसकी मल्टीपल कॉपीज हैं, जो हमारी कंबाइंड फाइल है, जैसे डेमो वाली पहले फाइल थी, कंबाइंड फाइल को हम अपलोड करेंगे, पर उससे पहले हमें इसको कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी। इंस्ट्रक्शन क्या होंगी? यू विल गो टू एडमिनिस्ट्रेशन, यू विल गो टू रिकॉर्ड मैचिंग रूल्स। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है रिकॉर्ड मैचिंग रूल्स का, क्लिक ऑन दिस। We will create a new record matching rule here. You can see, you can have the ISBN number as the matching rule, कि अगर आपने ISBN नंबर असाइन किए हुए हैं उसके अंदर पहले, तो आप इसको चूज कर सकते हैं। यहां हम क्या इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इसको, हम कोहा को, ये डेटाबेस को हम ये इंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं कि भाई अगर आपके पास ISBN नंबर है, इस केस में ISBN के केस में अगर आपके पास आपके रिकॉर्ड में ISBN नंबर है कोई, और वो ISBN नंबर हम दोबारा इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका जो आ रहा है उसके रिकॉर्ड को आपने इग्नोर कर देना है या उसको रिप्लेस कर देना है, वो जैसा भी इंस्ट्रक्ट करेंगे हम आगे। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे रिकॉर्ड मैचिंग रूल फ्रेम कर रहे हैं। अब सपोज हमने किया है टाइटल और ऑथर के हिसाब से, तो हम यहाँ पे एक रिकॉर्ड मैचिंग रूल बनाएंगे, टाइटल और ऑथर। तो यहाँ पे हम टाइटल एंड ऑथर, तो यहाँ पे हम उसको मैच थ्रेशोल्ड देंगे। मैच थ्रेशोल्ड मतलब कि हमने इसको टारगेट दे दिया कि इतने अगर नंबर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपने पास कर देना है। मतलब अगर आपके पास टाइटल और ऑथर दोनों को मिलाकर के 100 से ऊपर मार्क्स हो रहे हैं, नंबर हो रहे हैं, तो आपने उसको एंटर कर लेना है, इस रिकॉर्ड को अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे हमने रिकॉर्ड में मैच पॉइंट 1 और मैच पॉइंट 2 दो ऐड करनी है। मैच पॉइंट 1 क्या होगा कि आपने कहाँ कहाँ मैच करना है, वी आर इंस्ट्रक्टिंग इट टू मैच बाय द ऑथर एंड स्कोर 51, कि अगर आपका ऑथर मैच कर रहा है तो वो 51 स्कोर देगा। इट विल असाइन 51 a score of 51 if author is matched। और किस टैग में मैच करना है? 100 में, क्योंकि 100A में हमने ऑथर डाला था, तो 100A में मैच करना है। इसी तरह जो सेकंड पॉइंट होगा वो क्या होगा कि हमने टाइटल भी मैच करना है। अगर ऑथर और टाइटल मैच हो रहा है, 51 ऑथर के दे देना, टाइटल के भी 51 दे देना। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो थ्रेशोल्ड है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह हम क्या इसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वी आर इंस्ट्रक्टिंग दैट इफ ऑथर इज मैच्ड and title is matched, then apply these rules। क्लियर है? सो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हम इसको सेव कर देंगे। सो वी हैव क्रिएटेड वन record matching rule, that is title and author। So we will apply while uploading the file, while staging the record for import, we will apply those rules। Choose the file, this particular file, whichever we need, demo, upload। Here you can see there is one option, look for existing record in catalog। Here you will choose record matching rule। Here you can see these were the record matching rules which we have framed, title and author। And what the action, अगर रिकॉर्ड मैच कर रहा है तो आपने क्या करना है, अगर मान लो वो रिकॉर्ड मैच कर गया तो हमने क्या करना है, यहाँ पे उसको रिप्लेस का ऑप्शन है, ऐड का ऑप्शन है और इग्नोर का ऑप्शन है। तो हम उनको ये कहेंगे कि भाई अगर मेरे टाइटल और ऑथर इनकमिंग रिकॉर्ड्स में से मैच कर रहे हैं आपके डेटाबेस में किसी रिकॉर्ड के साथ, तो आप जो इनकमिंग रिकॉर्ड है उसको रहने दीजिए, जो रिकॉर्ड आपके पास है उसको रखिए, पर उसकी आइटम जो है वो ऐड कर दीजिए, जो भी इसके अंदर आइटम होंगी। तो वो क्या करेगा, हमारा जो डेटाबेस है, पहले हमने क्या किया, जो यूनिक टाइटल से वो हमने एंटर कर दिया, जो यूनिक रिकॉर्ड से दैट वी हैव एंटर्ड दैट फाइल
और उसके बाद हमने इसको ये कहा, जब हम कंबाइंड फाइल अपलोड कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमने कहा कि भाई आप यहाँ पे रिकॉर्ड मैचिंग रूल अपनाइए, while looking for the existing records in the catalog, for the incoming records look for the record matching rules for the title and authors, and if these are matched then you have to ignore those records, incoming records, and add the items which these records has. Clear? उसके बाद stage for import, and the record, the incoming record will be, you can see, I'll show you. You can see that there was no match like this. Otherwise ये शो कर देता अगर कोई ऐसी यहाँ पे 8 रिकॉर्ड्स इन फाइल तो 0 रिकॉर्ड्स। अदरवाइज यहाँ पे अगर आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है, अगर मान लो ये 8 रिकॉर्ड ऑलरेडी अवेलेबल हो डेटाबेस के अंदर, तो यहाँ पे आपको 8 रिकॉर्ड्स विद एटलीस्ट 1 मैच इन कैटलॉग, तो वहां पे आपको रिकॉर्ड शो कर देगा ये ऑलरेडी। ठीक है जी, इज इट क्लियर? हाँ सर, क्लियर सर, थैंक यू सर, थैंक यू। Sir, हाँ जी, am I audible? जी जी Sir, one little doubt. Actually, when we are migrating from the legacy system to Koha, जी there was a problem like we have a record and we have the items like the same record have multiple copy, maybe 10, 15 different number of. या So, what is the best way to add them? Because I was facing problem. We need to add the detail of each copy in separate columns while doing the mark entry. Means when we are converting that for staging. So, what is the best way? No, do you have records in Excel format? Right, because the old software it produce its database is basically able to export in a Excel format. Okay, so you have a report in Excel format, na? You have access Right. register in Excel format. Yes, yes, sir. So there is no problem. What is the problem then? If you have it in the Excel format, just prepare that Excel format in the format that I have created live. I'll send you the format, how you can create. No, sir. The problem was I was successfully able to update the bibliography by Okay. by doing the staging and mark with mark edit. Huh. Right. Hmm. The problem was adding the items. Like with each bibliography, there are 5 items or 10 items. Hmm. So the only way I was able to find that that 5, 12, that column which we have to make for each copy, we have to repeat that thing in the columns. So we have the 5 copy. So I have to enter the detail with the that barcode field Where you multiple have times to enter those records? in the Excel sheet for Why? staging. Is there any other method for that? Nee, just 1 minute. Let me show you. डॉक्टर महिपाल, इनको ये प्रॉब्लम आई है कि इनके पास पुराना सॉफ्टवेयर था। हाँ पुराने सॉफ्टवेयर के अंदर इनके पास एक्सेल में था, सारी बुक्स की डिटेल थी। हाँ जी। इन्होंने जब उसको माइग्रेट करने के लिए किया मार्क एडिट से, तो जितनी डुप्लीकेट कॉपीज थी, जो भी मतलब कि एक बुक की जो कॉपीज एक्स्ट्रा थी, वो इन्होंने हटा करके उसको स्टेज किया इस पे अपना कोहा पे। अब ये चाहते हैं कि जो इनकी जितनी कॉपीज हैं जो इनके पिछले रिकॉर्ड में, वो यहाँ पे ये उसको किस तरह से कर पाए। नहीं तो एक एक करके करने में तो काफी टाइम लगेगा। इज देयर एनी आइटम्स को, वे? हाँ यस सर, एग्जैक्टली आइटम्स मेरे को ऐड करनी है। बिब्लियोग्राफी तो मैंने मार्क से कर दी अपलोड। ओके, आइटम्स आप ऐड करना चाह रहे हैं। ओके, फॉर दैट यू हैव टू क्रिएट द MRC फाइल। Just extract the report of complete access and register from that legacy software. ठीक है, उसके बाद उसको prepare that particular Excel file in the format which and assign those tags. जैसा हमने यहाँ पे देखो डेमो फाइल में किया ना,
ये जैसे हमने ये फाइल तैयार की हुई है, इस तरह से आपने फाइल तैयार करनी है। सर जो आइटम्स हैं वो 552 जो 952 है इसमें डिटेल आएगी ना आइटम्स की? नहीं, आइटम्स की ये 952 इज आइटम टाइप। आइटम के जो एक्सेशन नंबर है दैट विल बी इन एक्सेशन रजिस्टर, सॉरी एक्सेशन नंबर इज इन 952P। 952P, राइट हाँ सर। हाँ, दैट आई तो विल शेयर सर विद यू। और एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट सर मल्टीपल कॉपीज होगी ना यहाँ पे तो? ये देखिए ना, ये मैंने हर एक को एक्सेशन नंबर, ये अलग अलग एक्सेशन नंबर्स हैं। ठीक है, और तो आगे? ये 5 अलग अलग कॉपीज हैं, एक ही ओके, टाइटल है और 5 कॉपीज हैं। ठीक ठीक है, है। तो ठीक ठीक जब ठीक हम ठीक। हमारे पास, जब आपने बिब्लियोग्राफिक डेटा आपके पास एंटर हो गया वहां पे, हम्म। तो उसके बाद आपने आइटम्स ऐड करनी है। तो उसके लिए वही रूल जो अभी हमने फ्रेम किया, डिस्कस किया, हाँ। तो वही रूल आप अप्लाई करिए वहां पे। और इस फाइल को एमआरसी फाइल कंप्लीट तैयार करके, इसकी कंप्लीट एमआरसी फाइल तैयार करके वो फाइल अपलोड करेंगे। वाइल अपलोडिंग वी विल अप्लाई दोज रूल्स, रिकॉर्ड मैचिंग रूल्स, एंड वी विल इंस्ट्रक्ट टू जस्ट, ओनली एट द आइटम्स। हाँ, टू ऐड द आइटम्स एंड इग्नोर द रिकॉर्ड्स। राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू, हाँ क्लियर सर। जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड हाँ इवनिंग। जी, सर मैं ना अपना जो रिकॉर्ड है इसका सारा बुक्स का वो एक्सेल शीट में बना रही हूँ। ठीक है। हाँ जी, तो सर जो जैसे इसके कॉलम्स होते हैं, बट ये जो आपने ऊपर बताए टैग्स होते हैं, ये जो 0 0 करके ना, हाँ हाँ उसके अकॉर्डिंग नहीं बन रहे, हाँ हाँ बना रही अभी। हाँ तो हाँ सर ये जो आपने बताया कि एक वो डेमो फाइल बनानी पड़ती है हर एक उसके लिए, यूनिक टाइटल के लिए। हाँ तो हाँ। सर वो उसके उसके लिए एक-एक बनानी पड़ेगी, जैसे यूनिक टाइटल है एक, कि उसको बल्क में हम बना के फिर एक्सपोर्ट कर देंगे और देन उसके बाद जो मैच रिकॉर्ड करना है हमने उसको कर लेंगे? नहीं, आपको पहले पहले ना, एक्चुअल में क्या है कि डेटाबेस के अंदर आपके पास एक एक रिकॉर्ड तो होना चाहिए ना मैच करने के लिए। जी, जी सर। हाँ, तो एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड आपके पास जब होगा, हुँ, तभी हुँ। तभी तो वो रूल अप्लाई होगा ना। जो हमने रूल फ्रेम किया है वो रूल तो तब अप्लाई होगा जब आपके पास डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड होगा। तो रिकॉर्ड, जब ऑथर और टाइटल हमने उनको कहा मैच करने के लिए, तो जब आपके हाँ जी। बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड में वो टाइटल और ऑथर होगा पर्टिकुलर, तब तो मैच जी। करेगा उसको, तभी तो फिर वो उसकी आइटम ऐड करेगा ना। अदरवाइज वो सारे जो हैं, हमने वहां पे इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप जो हैं, अगर टाइटल आपका मैच नहीं कर रहा, ऑथर और टाइटल मैच नहीं कर रहा, तो नया रिकॉर्ड बना देगा। तो वो सारे जो है, आपकी जितनी भी आइटम्स होंगी सबका रिकॉर्ड जो है न्यू क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। और सर एक और पूछना, जैसे हम इसमें लैंग्वेज का होता है, जैसे पंजाबी की बुक्स हैं, हिंदी हाँ की बुक्स हैं, तो हाँ। सर उनको हमने इंग्लिश में करना है? नहीं, वहां पे मीडियम का ऑप्शन है ना आपके पास, 020। जी सर। आपके पास लैंग्वेज कोड होता है, 020C है या 020A है। 020C है शायद लैंग्वेज के लिए। रणदीप। आप मार्क टैग्स देख सकते हैं। और मार्क यहाँ टेक। पे हम यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, वी कैन सी हियर न्यू रिकॉर्ड। देयर इज वन लैंग्वेज कोड 041 041, yeah. 041C 041C। जी सर। लैंग्वेज नहीं, सी नहीं, लैंग्वेज कोड ऑफ टेक्स्ट दिस वे A 041A। यहाँ पे आपका जो लैंग्वेज कोड है, वो मतलब लैंग्वेज का मीडियम है ये। यहाँ पे आपकी लैंग्वेज कोड डालेगा। ठीक है, लैंग्वेज मीडियम आप यहाँ डालेंगे। और बाईलैंग्वेज के लिए एंट्री, जैसे हमने कल कैटलॉगिंग में मैंने बताई थी आपको, एंट्री आप इस तरह कर सकते हैं। डायरेक्ट भी मतलब आप वहीं पे 245A में ही दोनों डाल सकते हैं। जब हम एंट्री कर रहे हैं तो आप यहाँ 245 में जब टाइटल डाल रहे हैं, सपोज एक बुक है हिंदी की,
तो आप यहाँ इंग्लिश में भी यही लिख सकते हैं और हिंदी में भी उसके जी साथ सर। स्पेस देके लिख सकते हैं, और जी यहाँ भी 246A में भी वेरिंग फॉर्म ऑफ टाइटल यहाँ भी डाल सकते हैं, तो दोनों तरफ से ठीक रहेगा, वो कोई इशू नहीं है। ओके ओके राइट सर। हाँ जी ओके सर, थैंक यू। जी। हाँ जी, नेक्स्ट। Any other query, please? हेलो, हेलो। Yes. गुड हाँ जी, इवनिंग सर। हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग। हाँ सर, हाउ टू कनेक्ट एक्सेल टू एमआर शीट सर? हाउ टू कन्वर्ट एक्सेल टू एमआरसी? हाँ जी, हाँ जी। तो यही तो कर रहे थे अभी तक हम। हाँ सर, यही बता रहा था कि एक एक का करना पड़ेगा या बल्क में भी हो सकते हैं, जैसे मेरे पास एक्सेल में डाटा है और हाँ, मुझे डॉट एमआरसी फाइल में सारा का सारा लेके आना है, उसके लिए बताओ सर। नहीं नहीं, आपके पास एक्सेल में डेटा है तो उस जी एक्सेल को आपने पहले इस तरह प्रिपेयर करना है। हाँ जी, ठीक हाँ है, जी, कर दिया सर। उसके बाद आपने मार्क एडिट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। ठीक है। ठीक है, ये मार्क एडिट हमने किया, तो ओके ओके ओके। मार्क एडिट में आपने एमआर की फाइल पहले क्रिएट होगी, और ठीक है। एमआर को एमआर से जब कंपाइल रिकॉर्ड करेंगे एमआरसी फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो एमआरसी फाइल जो है वो यहाँ पे अपलोड होगी आपके पास। हेलो, ओके ओके सर, ओके। यही क्वेश्चन था आपका कि कुछ हो रहा है? या सर, यही था। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, एनीवन एल्स? Still, something more is required, Doctor, on your part. सर एक क्वेश्चन Yeah. है सर। Yes. सपोज सर हम कैटलॉग करते टाइम कोई जगह पे सर डिपार्टमेंट ऐड कर सकते हैं, या सर एक्सेल शीट में जब हम डेटा कन्वर्जन करें तब इसका नहीं, क्या कोई क्या डिपार्टमेंट, सपोज ये डिपार्टमेंट से रिलेटेड ये बुक है सर, सपोज एजुकेशन की बुक है, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये बुक इन शॉर्ट इन फ्यूचर जब हम रिपोर्ट निकाले कि भाई सपोज ये सब्जेक्ट की बुक ये है डिपार्टमेंट, तो सर क्या हम उसको इस तरह डिपार्टमेंट ऐड कर सकते हैं बुक्स के अंदर? देखिए, उसके लिए आपको दो दो तरीके हैं। एक तो है कि कलेक्शन कोड आप बना सकते हैं, एक पर्टिकुलर कलेक्शन बना सकते हैं, कलेक्शन कोड। ठीक है, कलेक्शन कोड आप बना सकते हैं। $952 में कलेक्शन कोड जाता है। $952 जो है वो कलेक्शन कोड के लिए टैग है, वहां पे आप कलेक्शन कोड डाल सकते हैं। कलेक्शन कोड में ये होगा कि आपकी एक पर्टिकुलर कलेक्शन, जैसे रेफरेंस बुक्स है या एजुकेशन की बुक्स है या किसी एक पर्टिकुलर कलेक्शन के लिए आप कोड दे सकते हैं। दूसरा, आप उसको सब्जेक्ट हेडिंग तो हम देते ही हैं। 650A में जब सब्जेक्ट हेडिंग देंगे तो आप सब्जेक्ट वाइज बुक्स जो है रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। हाँ, वो 650A में जब हम डेटा एंटर कर रहे हैं तो 650A में हमने सब्जेक्ट उसका एंटर करते हैं। और ये सर $952 $8 $952 8। हाँ जी, ओके सर, हाँ, थैंक यू वहाँ पे सर। कलेक्शन कोड आप क्रिएट कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको पहले कलेक्शन कोड क्रिएट करना पड़ेगा ऑथोराइज्ड वैल्यूज में जाके। यहाँ पे आप मोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑथोराइज्ड वैल्यूज, यहाँ पे आपको कलेक्शन कोड सी कोड C code, this is collection code. Here we have to define the collections like we have defined shelving locations ना। हाँ सर, हाँ हाँ, उसी तरह से आपको यहाँ पे न्यू ऑथोराइज्ड फॉर कलेक्शन कोड, यहाँ पे आपको पहले कलेक्शन कोड जनरेट करना पड़ेगा, मतलब नया क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, ऑथोराइज्ड वैल्यू और मतलब इस तरह कोड देके जो भी आप करना चाहें, तो इस तरह करके डिस्क्रिप्शन में, जैसे सपोज ये एजुकेशन की बुक है तो मैं यहाँ पे एजुकेशन EDU कर दिया, और एजुकेशन जो भी आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना चाहें, और यहाँ पे सेव कर दें। अब यहाँ पे जब आप वो करेंगे
डिफाइन करेंगे तो वहां पे आप इसको $952.08 में यहाँ पे कलेक्शन कोड आप इसका असाइन कर देंगे। उसके बाद ये आप इसकी रिपोर्ट जो है कलेक्शन कोड के हिसाब से जनरेट कर सकते हैं कि एजुकेशन की बुक्स मेरे पास कितनी है पर्टिकुलर। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी। हाँ जी, एनीवन एल्स? Is there any other query? Okay. So we should proceed further, I think. Yes, sir. Is it clear to all? Or is there any confusion? Yes, sir, clear. Right. Okay. So यहाँ पे आपके पास जब हम यहाँ कैटलॉगिंग में आपके पास टूल्स का ऑप्शन भी था, यहाँ से हमने लेबल जनरेट, मैंने मेरे ख्याल कल डेमोन्स्ट्रेट किया था हाउ वी कैन क्रिएट द बारकोड लेबल्स। और इसी तरह यहाँ बारकोड इमेज जनरेटर भी है जहाँ से आप अपने पर्टिकुलर बारकोड इमेज जनरेट करके आप, अगर आपके पास ऑलरेडी बुक्स या आपके पास आईडी कार्ड है विदाउट बारकोड, तो आप उन पे पर्टिकुलर सिर्फ बारकोड ही इमेज जो है वो लगा सकते हैं। तो क्विक स्पाइन लेबल क्रिएटर है, लोकल कवर इमेज अपलोड करने का ऑप्शन है। यहाँ पे आपके पास, इसके अलावा यहाँ पे देखिए बैच एडिटिंग का ऑप्शन है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि आप जो आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, जो आपका बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड है या आइटम्स हैं, आप उनको एक बैच में मॉडिफाई भी कर सकते हैं। एक बैच में भी उसके ऊपर कोई किसी तरह का एक्शन ले सकते हैं, चाहे आप उसको मॉडिफाई करिए चाहे डिलीट करिए। ठीक है, तो इस तरह के आप बैच आइटम भी में भी चेंजेस कर सकते हैं बैच में, और इसी तरह आप बैच में रिकॉर्ड्स को भी मॉडिफाई या डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सपोज मेरे पास कुछ बुक्स हैं जो पहले टेक्स्ट बुक्स थी पर अब रेफरेंस बुक्स में कन्वर्ट हो गई है। सपोज मैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज मेरे पास एक बुक बैंक सेक्शन बन गया अलग से। I'll create an item type for book bank। मैंने अपनी लाइब्रेरी में एक नया बुक बैंक सेक्शन क्रिएट किया, और ये जो बुक्स हैं, कुछ बुक्स इसमें से टेक्स्ट बुक जो मेरे पास थी, उनमें से कुछ बुक्स बुक बैंक सेक्शन में मैंने रख दी। तो अब कोहा में उन बुक्स को वन बाय वन चेंज करने की बजाय आप उनको बैच में एडिट कर सकते हैं, बैच में मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर दैट वी विल क्लिक ऑन दिस कैटलॉगिंग, go to batch editing, click on batch item modification, and here we will put the barcode number of those particular books which we want to change. Here you can copy and paste, or we can, I don't think we have these barcode numbers. Let us see, do we have? Nothing. Okay, suppose we have those numbers, and the details of these books will be shown here. All the bibliographic detail will be shown here, and after that proceeding those details, जो ये form है with the same format which we have entered the items. We have entered items in this format. So all the details, all the tabs, all the fields, subfields are available here. Here what we will do, we are going to change those books into book bank books. So here we will just click on Koha item type, and from the textbook we will convert that to book bank books, and just click on save button. Just click on save. All these three books will be
converted into book bank books. So instead of going one by one, you can edit the batch items or the records likewise. If you want to change records in a batch, you can do it accordingly. Okay, is it clear? सर ये आइटम का कोई मार्क टैग है क्या सर? टोटली जितने भी जो दिख रहे हैं आइटम का सर, जो आइटम डिस्प्ले हो रहा है सर, जो आपने अभी दिखाया, उसके मार्क टैग है क्या सर? जैसे कॉल नंबर का है नहीं, 952P is item accession number code. ओके सर, बट इसके साथ जितने भी है, जैसे जो आइटम में जो अभी डिस्प्ले हो रहे थे सर, जितने भी टैग, जितने भी कॉलम्स, ABCD समथिंग, तो सर वो सभी का सर टैग कहाँ से मिलेगा? नहीं, देखो, जब आप आइटम की बात कर रहे हैं तो आइटम के जो टैग्स हैं वो टैग्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। ये सारा जो जब भी हम कोई आइटम ऐड करते हैं, सपोज हमारे पास ये बुक है, जस्ट वन मिनट, आई चेक। ओके, दिस बुक इज नॉट। सर INF 01 करिए तो। हाँ जी, INF 01 बुक का कोड, बारकोड। INF 01। हाँ सर। ओ सॉरी, सर्च कर। ओके, ये बुक है। तो यहाँ पे हमने जो जब भी एंटर करते हैं तो हम बल्क में जब बुक्स का करेंगे तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये 952 टैब है टोटली। यहाँ पे सपोज वी वांट टू assign some books as the withdrawn books, so what we will do, we will assign those information about those books in $952 that is, this is zero tab. $952 where we will assign in 0 and 1. 0 means it is not withdrawn and 1 means it is withdrawn, right? So we will click on, we will assign 1 for those books which have been assigned in $952. Likewise for the collection code, $952 and $952 for home library, $952 for barcode, $952 for full call number. Likewise for price, it's $952. Okay, so while preparing that file, we will assign $952 before these particular subfields, the tags. Okay? Yes, sir. Thank you, sir. जी। अजय सर ने शेयर किया है आपके साथ जो भी मार्क फील्ड्स हैं उनके डाटा जो है। राइट, अच्छा, यहाँ पे हम डेटा जो हमारा बिब्लियोग्राफिक डेटा है उसको यहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कैटलॉगिंग में एक्सपोर्ट कैटलॉग डेटा, और यहाँ पे हम अपनी पर्टिकुलर लाइब्रेरी चूज करेंगे जो भी आप करना चाहते हैं। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ जी, तो या पर्टिकुलर आप पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं। आइटम टाइप कौन सी चाह रहे हैं आप, किस पर्टिकुलर लाइब्रेरी का डेटा चाह रहे हैं, ठीक है।
किस कॉल नंबर से किस कॉल नंबर के बीच में, किस एक्सेशन डेट से किस एक्सेशन डेट के बीच में। तो सपोज मैं चाह रहा हूं कि मैंने अपनी लाइब्रेरी में आज कितनी बुक्स को कैटलॉग किया, तो उसकी जो है यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरह हम यहाँ पे आप जो है मार्क फाइल में, एमआरसी फाइल में फॉर्मेट में आपका जो रिकॉर्ड है, बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड है, उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये एमआरसी फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। आप एमआरसी फाइल में koha.mrc फाइल है, तो ये यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड आ जाएगी। इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी की जो भी वो होगी, बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड होगा, वो यहाँ पे koha.mrc करके मेरे पास आ गया। इसको हम नेम कर सकते हैं जो भी चाहें। महिपाल सर एक बार इसको रिपीट कर देना प्रोसेस को हाँ स्टार्टिंग से। जी, इसको मोर कैटलॉगिंग और यहाँ पे एक्सपोर्ट कैटलॉग डेटा, इस पे क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे आप एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी जहाँ का भी आप चाहते हैं, अगर आपकी एक ही लाइब्रेरी है तो नेचुरल एक ही शो होगी। यहाँ पे आप आइटम टाइप अगर पर्टिकुलर किसी आइटम के चाह रहे हो तो उसका भी आप यहाँ पे पैरामीटर्स लिमिट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। हम हमारी सर्च को लिमिट कर सकते हैं और यहाँ पे डोंट एक्सपोर्ट आइटम्स पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ रिकॉर्ड्स को एक्सपोर्ट करेगा, आइटम्स को नहीं करेगा। रिमूव आइटम्स नॉट ऑन बाय सिलेक्टेड लाइब्रेरीज, जो सिलेक्टेड लाइब्रेरीज ऑन नहीं करती है उनको रिमूव कर देंगे, चेक करेंगे तो रिमूव कर देगा। ठीक है, डोंट एक्सपोर्ट फील्ड, अगर पर्टिकुलर फील्ड हमें नहीं चाहिए कोई तो यहाँ पे हम उसको ना, जैसे मान लो आपको ऑथर नहीं चाहिए तो 100A लिख दीजिए, तो ये उसको उस फील्ड को एक्सपोर्ट नहीं करेगा। और किस आउटपुट फॉर्मेट में चाहिए आपको, मार्क में चाहिए, XML चाहिए, CSV चाहिए, और इस तरह फाइल का नेम देके आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हेलो महिपाल सर, एक क्वेरी थी। जो अभी आपने वो आइटम मॉडिफिकेशन बताया था ना, बैच वाला, हाँ हाँ, वो मैं ये पूछना चाह रही थी कि उसका कुछ फिक्स नंबर है या हम कितनी बार भी कुछ भी चेंज कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं आप, कितनी मर्जी बार करिए। जैसे बुक बैंक से टेक्स्ट, टेक्स्ट से रेफरेंस, मतलब जब भी हम जब मर्जी, जितनी मर्जी बार करिए, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ठीक ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ जी। हाँ जी, कोई और क्वेरी किसी की? Any other query, please? Dr. Mahipal, are we done for today? Yeah, it will take 5 more minutes, sir. Okay, please. तो यहाँ पे आपके पास एक और मॉड्यूल है छोटा सा, लिस्ट के बारे में। लिस्ट क्या होती है कि आप एक पर्टिकुलर, जैसे किसी भी सब्जेक्ट की लिस्ट बनाना चाह रहे हैं या कुछ पर्टिकुलर बुक्स हैं किसी भी तरह की जिनकी आप कुछ लिस्ट बनाना चाह रहे हैं। सपोज हमारे पास, जैसे हमने अभी INF बुक्स सर्च की थी कुछ, एक मिनट में, तो वो ये जो बुक्स हैं, जो लिस्ट हैं, वो आप 2 तरह से बना सकते हैं। किसी भी काफ़ी सारी हमें लिस्ट की ज़रूरत पड़ती रहती है, जैसे मान लो एजुकेशन की बुक्स की लिस्ट हम अलग से क्रिएट करना चाह रहे हैं, या कुछ भी, जैसे रेयर बुक्स की लिस्ट है, ये रेयर बुक्स है ना, तो इन रेयर बुक्स की मैं एक लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ अलग से, जितनी भी मेरे पास रेयर बुक्स हैं। तो उसका हम क्या कर सकते हैं, यहाँ भी आप ऐड टू लिस्ट, जैसे मैंने ये सर्च किया हुआ है, यहाँ भी आपके पास एक ऑप्शन है ऐड टू लिस्ट का। यहाँ पे आपके पास ऐड टू लिस्ट पे क्लिक करेंगे, न्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिस्ट का नाम दे देंगे हम, जो भी आप, माई लिस्ट जो भी देना चाहें, और इसको, या जो भी रेयर बुक्स आप देना चाहें, यहाँ इसको
कैटेगरी में पब्लिक और प्राइवेट। प्राइवेट मीन्स कि इट विल बी शोन टू यू ओनली, ठीक है, और पब्लिक मीन्स हर कोई इसको देख सकता है। तो आप इसको यहाँ पे प्राइवेट सेव कर लीजिए। तो ये आपकी एक लिस्ट जो है वो क्रिएट हो गई है। जब भी आप रेयर बुक्स की लिस्ट देखना चाहते हैं, आप लिस्ट में जाइए, यहाँ पे आपके पास एक लिस्ट बनी हुई है रेयर बुक्स की, इस पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपको उसकी रेयर बुक्स की लिस्ट जो है इस तरह से शो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपकी वहां से भी आप एक लिस्ट बना सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से डायरेक्ट भी आपकी लिस्ट जो है, यहाँ से हम लिस्ट में न्यू लिस्ट पे जाएंगे, लिस्ट पे जाएंगे, क्लिक किया, यहाँ पे आपके पास न्यू लिस्ट क्रिएट करेंगे। नेम, नेम मीन्स आप बुक का नेम देंगे लिस्ट का। ऑनर बाय डिफॉल्ट जो भी क्रिएट कर रहा है वो बाय डिफॉल्ट ऑनर होगा। और शॉर्ट दिस लिस्ट बाय, कि आप इसको किस तरह से शॉर्ट करना चाह रहे हैं, टाइटल वाइज, ऑथर वाइज, कॉल नंबर वाइज, एडी डेट वाइज, जैसे भी चाहें। और पब्लिक चाह रहे हैं कि प्राइवेट चाह रहे हैं। उसके बाद अलाउ चेंजेस टू कंटेंट फ्रॉम, कौन इसमें कोई चेंज कर सकता है किसी तरह का, या ओनर चेंज कर सकता है सिर्फ, या परमिटेड स्टाफ भी कर सकता है, या सिर्फ स्टाफ कर सकता है, या कोई भी जो लिस्ट को देख रहा है वो कर सकता है। तो इस तरह हम इसको डिफाइन करके सेव कर सकते हैं इस लिस्ट को। ये लिस्ट जो है वो बाद में, जैसे सपोज हम ओपैक कस्टमाइज करेंगे, तो जो कोरासोल होगा हमारा जो न्यू अराइवल्स के लिए, तो इस तरह न्यू अराइवल्स की लिस्ट हमारी ये क्रिएट होगी, और वहाँ पे हम डेमोन्स्ट्रेट और भी करके दिखाएंगे आपको। तो वहाँ पे आपको यूज भी इसका नजर आएगा लिस्ट्स का। हाँ जी, लिस्ट बस इतनी ही है, लिस्ट में ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ जी। Any query, please? Sir, there was one query from my wife's side. Okay. Yes, हाँ जी, बताइए, what was your query? हाँ हाँ, एक्चुअली हिज क्वेश्चन, हर क्वेश्चन वाज कि क्या हम इसको बार कोड से एंट्री कर सकते हैं, न्यू लिस्ट की बार कोड से बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। हम यहाँ पे देखिए न्यू लिस्ट में बना के दिखा देता हूँ आपको। माई लिस्ट, सेव, यहाँ पे ऐड आइटम पे क्लिक करेंगे हम। जब मैंने लिस्ट को नाम दे दिया, सेव कर लिया, तो यहाँ पे we will go to add item. Here we will enter the barcode numbers. I'll just enter the barcode number. Save. ये देखिए, it has been added to the list. This has been added to the list. Please verify if it's not already in the list. तो ये जो लिस्ट है ये ऑलरेडी हमारे पास है। इस तरह से आप बारकोड जो है, बारकोड से आइटम ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स में प्रिंट कर सकते हैं, लिस्ट को सेंड कर सकते हैं। हाँ जी, एनी अदर क्वेरी? सर इसमें लिस्ट में कुछ और आइटम्स ऐड करने के लिए इसको कैसे क्या एडिट होगा ये? एडिट का ऑप्शन है ना यहाँ पे, देखो एडिट, एडिट लिस्ट। अच्छा, और आइटम्स ऐड करनी है तो ऐड आइटम्स पे क्लिक करिए। बस जस्ट आइटम्स ऐड करना चाहते हैं आप इसके अंदर, यहाँ पे बस ऐड आइटम पे क्लिक करिए, बारकोड डालिए। आई डोंट हैव अनदर बारकोड राइट नाउ, अदरवाइज मतलब जैसे भी जो भी बारकोड डालेंगे उसकी लिस्ट यहाँ पे जनरेट हो जाएगी, वो उसकी डिटेल आ जाएगी। जैसे इनकी डिटेल आ रही है ना, इसी तरह से एक और टाइटल आ जाएगा, उसकी डिटेल आ जाएगी नीचे। ओके सर।
हाँ जी. Anyone else? Anyone else, if they have any query, they may put it up. Otherwise, we are going to wind up the session for today. Any query, please? Sir, are we going to get the recorded sessions? We are trying to provide that sessions to you. Already, we have shared one file. Day one file is already there. I think that's in public domain also. So for other days, we are trying to, and shortly we will provide that. Yes, the recordings for 2 more days will be uploaded today. By today night, till 10 p.m. today, 2 more links to 2 more files will be sent to you. Actually, it takes more than about 16 to 18 hours to get the recording of the lectures from the Google side. So it takes time to process and then to provide in the public domain. So today we are going to provide the 2 of the other files. Already day 1 has been shared. Day 2 and day 3 will be provided to you by today night. So I think, Dr. Mahipal, I believe there is no other query from the participant side. So I once again thank you for this session, for today's session. It was wonderful that you have shown them the migration of the data that is very much required. If they are using some other software, then how to get the data from it. And if you want to export the data, that also you have showed today. So it was a wonderful lecture, and I appreciate you for that. And with this, we conclude the session of today. And I request you to join 5 minutes prior to 5 p.m. tomorrow. Kindly don't make us to wait for you for another 15 or 20 minutes. That is too long a period to wait for, because others are there and we kept on waiting for you. So I request all of you to please join by 4:45 tomorrow. So we will start the session by 5 tomorrow. Thank you. Thanks a lot. So thank you, Dr. Ajay. Thank you for your support. Okay. Good night, everyone. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Sir. Good night. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Breathe. डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर रुपेश, क्या आवाज पहुंच रही है? हेलो। नमस्कार डॉक्टर हाँ जी, साहब। राजेश जी। नमस्कार, कैसे हैं नमस्कार सर। महिपाल बोल रहा सर, हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया। मैं ये कह रहा था जी, मेरे पास सॉफ्टवेयर नहीं है। मैं चाहता हूँ थोड़ी बहुत अच्छा। प्रैक्टिस हो जाती, वो कैसे डाउनलोड करूँ? नहीं, आप डेमो पे करिए ना प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने के लिए डेमो चाहिए आपको। क्या जी? प्रैक्टिस के लिए चाहिए। हाँ, प्रैक्टिस के लिए चाहिए बस। हाँ, तो आप डेमो पे करिए प्रैक्टिस। डेमो वर्जन पे ये जो है ना आपका डेमो कोहा, गूगल पे लिखिए आप डेमो कोहा। अच्छा जी। तो वहां पे आपको विकी की लिंक्स आएंगे डेमो के लिए। अच्छा जी। हाँ, तो वहां पे आप किसी भी डेमो साइट को चूज करके उसका जो यूजर नेम और पासवर्ड है वहां पे लिखा हुआ है उनके सामने। अच्छा जी। वहां पे आप क्लिक करके, हाँ मैं डेमोस्ट्रेट आपको दिखाऊं करके। 1 मिनट रुको, एक बार दिखा दो डॉक्टर साहब। मैं दिखा रहा हूँ, 1 मिनट रुको। यहाँ ना आप गूगल पे लिखोगे, स्क्रीन शो हो रही है मेरी? हाँ बिल्कुल शो हो रही है डॉक्टर साहब। ठीक है,
तो यहाँ आप गूगल पे लिखोगे ना कोहा डेमो, हाँ मैंने लिखा है यहाँ पे डेमो कोहा, तो यहाँ पे जो पहला लिंक आया ना आपका डेमो, ये यस इस सर, पे मैंने क्लिक किया, ठीक है सर। और यहाँ किसी को भी खोल लो आप, जिसको भी खोलोगे ना इसके सामने यहाँ यूजर नेम पासवर्ड लिखे हुए हैं, ये है, ये यूजर अच्छा नेम जी, पासवर्ड है। बस जैसे मान लो मैंने ये खोला, ठीक है, इसको खोला मैंने यहाँ पे, और इसका स्टाफ और स्टाफ वन है यूजर नेम और पासवर्ड। तो बस यहाँ पे, अच्छा ये तो बाई चांस खुला ही है पहले ही, हाँ इसको खोल के देखते हैं, 1 मिनट, इसको मैं दिखाता हूँ। मैंने ये खोला, इसका है बाय वाटर बाय वाटर, तो यहाँ इस तरह से डिटेल मांगेगा ये आपसे, यहाँ बाय वाटर आपने लिखना है, यस सर, यूजर नेम भी पासवर्ड भी, बस ये खुल जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ आप प्रैक्टिस करिए जितनी मर्जी, ये कोहा का इंटरफेस है। अच्छा इसमें कोई ऐसा भी है हम डाउनलोड करके थोड़ा बहुत अपना भी काम कर लें? ना, ऐसा नहीं है, अच्छा आप है वो फ्रीवेयर तो नहीं फिर बता ये? इंस्टॉल ही करना पड़ेगा फिर आपको वो तो। हाँ इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाँ इंस्टॉल भी फ्री डाउनलोड हो जाता होगा या नहीं, आपसे ही लेना पड़ेगा? नहीं वैसे तो फ्री है, लेकिन उसमें ना टेक्निकल काफी ज्यादा है, तो अच्छा वो मतलब इंस्टॉल करना, कस्टमाइज करना उसको, वो करना ना, वो टेक्निकल है। उसके लिए आपको मतलब उबंटू की नॉलेज होनी चाहिए, आपको डेटाबेस की नॉलेज होनी चाहिए, आपको लाइनक्स की मैं नॉलेज। कॉलेज में था उस समय तो मैं ले गया था आपसे, और मैंने मेरे कॉलेज की लाइब्रेरी को अपडेट भी किया था इसमें, लेकिन यहाँ पे काफी साल हो गए सर। नहीं, कहाँ अपडेट किया था अपनी कॉलेज लाइब्रेरी को? आकाश कॉलेज ऑफ एजुकेशन की लाइब्रेरी को किया था जी मैंने अपना। आपने सेमिनार नहीं किया था 2012-13 में? अच्छा, अपने कॉलेज की कॉन्फ्रेंस थी अपने हाँ 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 ऑफलाइन। हाँ, 2012 में थी। हाँ 12 में या 13 की बात है, 12 की है शायद। 12 की है, 12 में थी वो। हाँ 12 में मैं आया था उस समय, यहीं से आप पेन ड्राइव ले गया था, और फिर 2-3 साल तक मैंने यूज किया इसको। अच्छा, थोड़ी सी इसलिए कम कर रहा था। अब उस टाइम वो पता है क्या है, वो जो वो है ना सीडी वगैरह, हाँ हाँ वो फिर, हाँ वो चीजें ज्यादा कामयाब नहीं होती खराब, वो खराब हो जाते हैं जी। है। हाँ हाँ, वो ज्यादा वो नहीं है, प्रैक्टिस तो तो डेमो इसको पे ही अगर कर आप, लें। हाँ डेमो में करते रहो प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस डेमो ये है, साथ ही साथ काम कर लें। बाद में है, इंस्टॉल कर लेंगे, फ्री होंगे है? जिस समय कभी मिलते हैं तो फिर इंस्टॉल करवा ले जाएंगे आपके पास से। हाँ कोई बात नहीं, कभी जब चक्कर लगेगा तब देख लेंगे आप। हाँ। ना ठीक है डॉक्टर साहब। हाँ, ये आपका तो बहुत कहाँ बढ़िया पे किया है डॉक्टर अभी, साहब आप कहाँ आपने। जॉब कर रहे हो? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में आ अभी गया जी, स्कूल में। अच्छा, स्कूल में आ गए हैं, ठीक है ठीक मैं है। जीन में स्कूल में एज ए टीचर ज्वाइन कर लिया मैंने, गवर्नमेंट स्कूल अच्छा, में। जींद में कहाँ पे हो अभी आप? ये राजौंद के पास से, जींद जिले का जो बॉर्डर है वहीं पर है, बिघाना गांव है। हम्म। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, यस सर। चलो बढ़िया। चलो ठीक, ठीक है राजेश जी फिर। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। दोबारा ओके। अटैच करवा दिया आपने हम। ओके थैंक यू सर। चलो 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 बढ़िया, ठीक है जी, ओके ओके।